ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं ड्रैगन एज ओरिजिन का पार्ट 2। तो पिछले पार्ट में हमने जो है अपना ओज़मार का स्टोरी कंप्लीट किया था और अब हम क्वेस्ट पे हैं ऑस्टगार में इस समय। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है ग्रे वार्डन बनने की। तो सबसे पहले कुछ क्वेस्ट्स करने होंगे। लेट्स सी। Who's begun? This isn't good. I'd hate to waste such a promising member of the breed. Are you the new warden? I could use some help. This is a Mabari, smart breed and strong. His owner died in the last battle, and the poor hound swallowed Darkspawn blood. I have medicine that might help, but I need him muzzled first. Go in the pen and let him smell you. We'll know right away if he'll respond. Let's hope this works. I'd really hate to have to put him down. Well done. Now I can treat the dog properly, poor fella. Come to think of it, are you heading into the wilds anytime soon? There's a particular herb I could use to improve the dog's chances. It's a flower that grows in the swamps here, if I remember. If you happen across it, I could use it. It's very distinctive, all white with a blood-red centre. Good. In the meantime, I'll begin treating our poor friend. ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑस्टगार में पहला क्वेस्ट मिला है कि इस डॉग ने जो है डार्कस्पॉन का ब्लड खा लिया था, चख लिया था। अब उसकी वजह से थोड़ा बीमार है, तो हमें जंगल में जाकर इसके लिए एक बूटी ढूंढनी होगी। तो फिलहाल बाकी क्वेस्ट देख लेते हैं। मेरे ख्याल से लाइट थोड़ी ज़्यादा है। थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ, तो अब हमें पहले जाना है ऑस्टगार में, ज्वाइनिंग द ग्रे वार्डन। एलिस्टर, ठीक है, हमें एलिस्टर को ढूंढना है और मेरे ख्याल से एलिस्टर सामने है। तो ये रहा एलिस्टर। What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The grumpy one. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. You ठीक है, तो ये था एलिस्टर। one good thing about ये the है Blight is how एलिस्टर। it brings people together. Oh, nothing. Just trying to find a bright side to all this. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage. And that makes you Duncan's new recruit, I suppose. Glad to meet you. As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Eager, are we? Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. With the mage, the circle is here at the King's request, and the Chantry doesn't like that one bit. They just love letting mages know how unwelcome they are, which puts me in a bit of an awkward position. I was once a Templar. I'm sure the revered mother meant it as an insult, sending me as her messenger, and the mage picked right up on that. I never would have agreed to deliver it, but Duncan says we're all to cooperate and get along. Apparently they didn't get the same speech.
If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. तो चलो हम चलते हैं आगे अपने क्वेस्ट की तरफ। तो हम एलिस्टर से मिल लिए हैं और अब हमें जाना है डंकन के पास। और मेरे ख्याल से डंकन है सामने। ठीक है। You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Duncan. I'll go collect who we're missing. This is Sir Jory, a knight from Redcliffe. How do you do? And this here is Davith, a fellow from Denerim. That's me. I'm a fellow. And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Korcari Wilds to perform 2 tasks. The first is to obtain 3 vials of Darkspawn blood, 1 for each recruit. There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. The scrolls contain treaties promising support, treaties that may prove valuable in the days to come. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. ठीक है, तो अब हमें जाना है, लेट मी सी, कोरकारी वाइल्ड्स में। वहाँ पे कुछ ट्रीटीज को रिट्रीव करना है और साथ ही हमें चाहिए डार्कस्पॉन का ब्लड। तो चलते हैं। Hail. I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight. तो ये है कोरकारी वाइल्ड्स और हमें यहाँ पे कुछ करने हैं टास्क। तो ये रहे हमारे कंपेनियन, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, Do this, do that. इनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, किसी पे अटैक करना है, कौन सा अटैक करना है। इन्हें एक जगह रुकने के लिए बोल सकते हैं या फिर चारों को एक साथ कलेक्ट करके हम इनको ऑर्डर दे सकते हैं कहाँ जाना है, कहाँ पे नहीं। चलो ठीक है, अपना मेन कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं। ये रहा टैक्टिक्स का ऑप्शन। इसमें हर कंपेनियन के लिए कुछ टैक्टिक्स हैं, जैसे कि एनिमी एनी, मतलब जैसे ही कोई एनिमी आपके सामने आता है तो सबसे पहला अटैक ये जो है ये फ्लरी करेगा। उसके बाद अगर 3 एनिमीज से सराउंडेड हो जाता है तो डुअल वेपन स्ट्राइक करेगा, स्वीप करेगा, जिससे कि कुछ 2-3 टारगेट को एक साथ डैमेज दे सके। इसी तरह से सबके कुछ टैक्टिक्स हैं जिनमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, मतलब किस तरीके से जो है एनिमी से लड़ेंगे, टैकल करेंगे, जो कुछ भी है। चलो खैर, अब जो है इनकी एआई किस तरीके से नहीं कंट्रोल करेगी, ये टैक्टिक्स में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ आ गए वुल्फ्स। Will not fail. I didn't warn you! May our blade strike true! Very well. Say your prayers! Don't say I didn't warn you! Push them Right back! to the face! I shall do it. See,
तो मैं दूसरे मतलब कैरेक्टर के साथ खेल रहा था, तो मैंने नाइटमेयर करके रखा था। तो एज यू कैन सी कि नाइटमेयर में एनिमीज को मारना कितना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो बिगनिंग के वुल्फ है, आगे और भी डिफ़िकल्ट होगा और गेम प्ले जो है थोड़ा स्लो होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं भी इस गेम प्ले को पूरा नॉर्मल में ही कंप्लीट करूँगा। ठीक है, ये हमें कुछ लूट्स मिली हैं। एंड ठीक है, यहाँ पे एक डेड बॉडी जिसमें मिला हमें एक लेटर। खैर हम पढ़ेंगे नहीं। और हमें एक क्वेस्ट मिला है, यू फाइंड अ कॉप्स नियर द entrance of the Kurkari wilds. A letter on the corpse details a path through the wilds that should lead to the place where the deceased is meant to meet his father. Consult the note, a letter to Jogby for the more information. ठीक है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स होंगी। कंसल्ट द लेटर। अगर हम अपनी इन्वेंट्री में जाएंगे, क्वेस्ट आइटम में नहीं है, मेरे ख्याल से कोडेक्स में होगा। माय डियर एसन, तो ये लेटर है, कुछ डिटेल्स दी गई हैं। Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Oh, ये बंदा तो कांप रहा है। Please help me. I've got to return to camp. I have bandages in my pack. Thank you. I've got to get out of here. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? 100? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the Horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. That's true. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. ठीक है, तो लोगों की हवा निकल रही है यहाँ पे डार्कस्पॉन्स की वजह से। चलो, अब हमारा आमना सामना होने वाला है कुछ डार्कस्पॉन से। फिलहाल सब कुछ ठीक लग रहा है। और ये कुछ सिपाहियों की लाशें हैं जिन्हें डार्कस्पॉन्स ने चेतावनी के लिए लटका दिया है। और ये रहा फूल जो हमें चाहिए था। अब हम चलेंगे यहाँ पे दूसरे टीले पे। यहाँ कुछ और डार्कस्पॉन्स हैं। Poor slobs. That just seems so excessive. Any last words?
shall be done. कुछ बॉक्सेस I shall do it. It is begun. जिनमें है कुछ लूट्स। मेरे ख्याल से ये नहीं खुलेगा। ओह, खुल गया। से आगे जाके हमें ज़्यादा ही परेशान से सामना करना होगा। And then It is begun. चलो It shall be done. लेट्स सी, हमें 3 वायल्स चाहिए थी और हमें 2 मिल चुकी हैं। एक और वायल चाहिए, उसके बाद हम लोग ट्रीटी के लिए निकलेंगे। वुल्फ बेल्ट। It is begun. किधर जाना है? इस तरफ। क्या सच में इसी तरफ जाना है? I shall do it. तो ये रहा रास्ता आगे जाने का। करने वाले हैं। Good job. और ऊपर कुछ डार्कस्पॉन्स रहे। Shall be done. और ये रहा वेनम, थोड़ा एंडी रहेगा। तो इस गेम में आप कुछ टॉक्सिन्स और वेनम्स क्राफ्ट कर सकते हैं, जिनको अपने वेपन्स पे कोड करके डैमेज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और आप ये रही जगह। There, more of the fiends ahead. यहाँ कुछ और डार्कस्पॉन्स हैं। Say I didn't warn you!
बात नहीं। It shall be done. सो इसमें परमानेंट डेथ नहीं होती जब तक आपके सारे कंपेनियंस ना मर जाएं और आप भी ना मर जाएं। तो अगर उनमें से कोई भी जिंदा है और फाइनली बैटल ओवर हो चुकी है तो आपके कंपेनियन जैसे रिवाइव हो जाते हैं, लेकिन एक इंजरी के साथ। तो इंजरी फिक्स करने के लिए हमें चाहिए होगी लेसर इंजरी किट। ओके फाइन, अब हम लोग चलते हैं आगे। ये रही एक एल्फ फ्रूट। तो हीलिंग आइटम्स बनाने के लिए आपको एल्फ फ्रूट की रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये जंगलों में मिल जाएगी, साथ ही आपको मिल जाएगी As you say, I shall do it. कुछ वेंडर्स के पास भी। ठीक है, क्या कुछ जगह बाकी रह गई थी? हाँ, ये जगह शायद यहीं पे एक हिडन स्टैश है। नहीं, वो जगह नहीं है, बट मेरे ख्याल से हम लोग आसपास ही हैं। Shall be done. Another point. ठीक है, ये रहा रास्ता। तो यहाँ पे कुछ वुल्स हैं। Let's make this quick! Dead yet? Shall be done. We are that awesome. ठीक है, वुल्फ को मारने के बाद हम आते हैं यहाँ, और यहाँ पे एक आयरन चेस्ट।
ये हमारा क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मेन क्वेस्ट की ओर। हमें ट्रीटी लानी थी। तो वो है इस जगह पे। तो यहाँ पे फाइट थोड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे एक मिशनरी कर सकते हैं। Right then. Watch out! Quickly, we must fight. I shall do it. चलो, काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल हो गए सारे एनिमीज। अब देखते हैं इनके पास क्या क्या लूट है। चलो, इसको रिवाइव करने के बाद अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि शायद यहीं पर एक एनिमी और है। हाँ ठीक है, सामने रहा। तो ये कुछ एशेस हैं, पाइल ऑफ रॉक्स हैं। अगर इसके ऊपर हम थोड़ी सी एशेस डालेंगे तो यहाँ स्पॉन होगा एनिमी। It shall be done. Slum. Now we do battle. As you say. It shall be done. Let's make this quick. It has begun. एंड इट्स डन। और हमें मिले हैं एन्चेंटेड फ्लूट फुटिंग, जो कि हमें देते हैं 6 डिफेंस। ठीक है, तो एवरीथिंग इज डन हियर। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग इधर आएंगे नीचे। और साथ ही साथ है
मार दिया। और यहाँ पर है कोरल फ्रूट और सामने है कुछ एनिमीज। चलो Very well. I shall do it. तो हमें मिला एन्चेंटेड डैगर और साथ ही साथ हमारा लेवल भी अप हो गया है, तो फिर से डेक्सटेरिटी पे फोकस करेंगे और इसके बाद कॉम्बैट ट्रेनिंग पे। एंड आफ्टर हमारा मोमेंटम अनलॉक हो गया है, अब हम अटैक स्पीड को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो चलो इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। यार फिलहाल अब कोई लड़ाई नहीं होनी है, तो यहाँ पे रहा वो चेस्ट जिसमें है ट्रीटी और ये चेस्ट है खाली। Well, well, what have we here? Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? What say you? Scavenger or intruder? तो ये है मॉर्गन। 'Tis a tower no longer. The wilds have obviously claimed this desiccated corpse. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wilds, she is. She'll turn us into toads. Witch of the wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there, dwarf. You have nothing to fear from any witch. Tell me your name, and I shall tell you mine. Let us be civilized. And you may call me Morrigan, if you wish. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer? You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. 'Twas my mother, in fact. There is a sensible request. I like you. I'd be careful. First it's, I like you, but then zap. Frog time. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you.
Greetings, Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Davith. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Does your dwarven mind give you a different viewpoint? What do you believe? A statement that possesses more wisdom than it implies. Be always aware. Or is it oblivious? I can never remember. So much about you is uncertain, and yet I believe. Do I? Why, it seems I do. So this is a dreaded Witch of the Wilds. Witch of the Wilds, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales, though she would never admit it. Oh, how she dances under the moon. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them? And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this Blight's threat is greater than they realize. Either the threat is more, or they realize less. Or perhaps the threat is nothing. Or perhaps they realize nothing. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. ठीक है, तो हमें ब्लड की वायल्स भी मिल गई हैं और हमें ट्रेडी भी मिल गई है, तो हम जाएंगे डंकन के पास। डंकन कहाँ है? डंकन यहाँ है, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं और इसको देते हैं फ्लावर। Mabari's stable for now, but not improving. Unless I get that herb I told you about, there's not much hope. Let me see. Yeah, that's exactly it. Wonderful. Give me a moment and I'll make this into an ointment. He looks better already. I'm sure he'd thank you himself if he could. A day, maybe 2. There's enough ointment for him to make a full recovery. Why not come back after the battle? Perhaps we can see about imprinting him on you. Maybe. It's likely he understands you're responsible for curing him. Mabari are at least as smart as your average tax collector. Come back after the battle and just... or take another look. ठीक है, तो हमने मबारी को मेडिसिन दे दी है और उसके बाद ठीक है, तो ये है वैन। आगे हमारा आमना सामना फिर से होगा। फिलहाल हमका ज़्यादा कन्वर्सेशन में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये रहा क्वार्टर मास्टर। Hello again. Is there something you need? तुमने जंगल Some में जो supplies, perhaps? यूजलेस करेक्ट करी थी। Arms and armor, for the most part. It's for the King's men, but you Grey Wardens can buy what you need for a modest price. I also have some goods on the side I can provide. Strictly off the record, of course, to keep morale up, you understand. So long as you keep it quiet. हाँ ठीक है, तो इसके पास 2 तरीके की इन्वेंट्री है। अगर आप बोलेंगे अदर गुड्स तो ये कुछ हायर वर्जन दिखाएगा जो कुछ भी इसके पास है, तो हम सब खरीद लेते हैं। इंजरी किट थोड़ी हैंडी रहेगी। फायर बम रेसिपी, कॉन्सेंट्रेटेड रूट एक्सट्रैक्ट रेसिपी। उसके बाद लॉन्गबो, आइस एरो थोड़े काम आएंगे। फायर एरो
ये काम आएंगे। Enchanted staff। चलो इसको बाय कर लेते हैं, आगे मेजेस को देने के काम आएंगे। एसिड फ्लास्क, सॉलिड बॉम्ब और उसके अलावा लीरियम पोशन। ठीक है, ओके फाइन। तो जो हमें चाहिए था ऑलमोस्ट सब हमारे पास है। अपना एक्स्ट्रा सामान निकाल देते हैं हम। इसके अलावा कोई फालतू के वेपन्स, डैगर्स, एन्चेंटेड डैगर, इसको बाय कर लेते हैं, ये थोड़ा यूजफुल रहेगा। और बैकपैक शायद हमने पहले ही बाय कर लिया था। ठीक है, ओके फाइन। देखते हैं हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा क्या मिला है। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग डंकन के पास और बताते हैं कि हमने सारा सामान जो है वो कलेक्ट कर लिया है। So you returned from the wilds. Have you been successful? Good. I've had the circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now rather than later. If only such secrecy were unnecessary, and all understood the necessity of such sacrifice. Sadly, that will never be so. Let's go then. I'm anxious to see this joining now. I agree. Let's have it done. Then let us begin. Alistair, take them to the old temple. ठीक है, तो हमारा ग्रे वार्डन में ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए एक रिचुअल The करना more I होगा। hear about this और ये joining, ritual the less है। I like it. Are you blubbering again? Why all these damn Yeah. tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. I only know that my wife is in Highover with a child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The Wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the Blight. You saw those Darkspawns tonight. Wouldn't you die to protect your pretty wife from them? Maybe you'll die. Maybe we'll all die. If nobody stops the Darkspawn, we'll die for sure. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last, we come to the joining. The Grey Wardens were founded during the first Blight, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of Darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the Darkspawn and use it to slay the Archdemon. Not all who drink the blood will survive, and those who do are forever changed. This is why the joining is a secret. It is the price we pay. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters.
Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten, and that one day we shall join you. Davith, step forward. Maker's breath. I am sorry, Davith. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Had I known... There is no turning back. No! You ask too much. There is no glory in this. I am बंदे को sorry. निपटा दिया गया। But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. From this moment forth, you are a Grey Warden. It is finished. Welcome. 2 more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible. I'm glad at least one of you made it through. How do you feel? Jory was warned that there was no turning back, as were you all. When he went for his blade, however, he left me no choice. It brought me no pleasure to end his life. The Blight demands sacrifices from us all. Thankfully, you stand here as proof they are not all made in vain. Did you have dreams? I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the Darkspawn, as we all do. That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of those who didn't make it this far. Take some time. When you're ready, I'd like you to accompany me to a meeting with the king. The meeting is to the west, down the stairs. Please attend as soon as you're able. ठीक है, तो हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ज्वाइनिंग में हर कोई ज़िंदा नहीं बचता, कुछ लोग डार्कस्पॉन का ब्लड पीने के बाद मर जाते हैं, बट वी सर्वाइव्ड और अब हम लोग हैं ग्रे वार्डन। तो चलो, हमें लेवल अप पॉइंट्स भी मिले हैं। तो हमने नेसेसरी जो टैलेंट्स हैं वो अनलॉक कर लिए हैं। अब हम केवल फोकस करेंगे डैमेज आउटपुट पे। तो सबसे पहले डुअल वेपन का नेक्स्ट लेवल, डुअल वेपन फाइननेस, उसके बाद हम लोग एक्सपर्ट पे जाएंगे, उसके बाद मास्टरी पे जाएंगे। देन आफ्टर कुछ और हम लोग ब्रांचेस भी अनलॉक करेंगे, उसके बाद सारा फोकस इन चीज़ों पे होगा। तो चलो, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो भी कर लेना। हैव अ ग्रेट डे।